Hello student, today I am going to discuss a very important topic of accountancy of class 12th, accounting for not-for-profit organization, and that is the treatment of fund-based accounting. Let us discuss the topic fund-based accounting. Fund-based accounting is that accounting in which a specific fund is created to meet a specific liabilities. All incomes and receipts during the current year related to the fund are added and all expenses related to the fund are deducted. Example of such funds are building fund, library fund, sports fund, prize fund, etc. Under this accounting, all treatments are made in liability side of balance sheet. If any part of fund is invested, so it is treated as assets and shown in the asset side of balance sheet. Dear student, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वह अकाउंटिंग है जिसमें एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया जाता है टू मीट स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़. जितनी भी इनकम और रिसिप्ट ड्यूरिंग द करंट ईयर होगी वो सभी को हम इस फंड में जो स्पेसिफिक फंड बनेगा उसमें ऐड कर देंगे और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी को डिडक्ट करेंगे. ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में करेंगे. फॉर एग्जांपल फ़ंड क्या हो सकता है, बिल्डिंग फ़ंड हो सकता है, लाइब्रेरी फ़ंड हो सकता है, स्पोर्ट्स फ़ंड हो सकता है, मैच प्राइज़ फ़ंड हो सकता है, मैच फ़ंड हो सकता है, टूर्नामेंट फ़ंड हो सकता है, पुअर बॉयज़ एजुकेशन फ़ंड हो सकता है. क्योंकि आप जानते हो जो एनपीओ है ना, एनपीओ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर में काम करता है, जो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है. तो यहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्पेसिफिक फ़ंड होगा जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ फंड. हियर टू टाइप्स ऑफ फंड आर देयर, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड. नाउ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड. Unrestricted fund does not carry any restriction in respect of its use. In other words, management can use the amount in the fund as it deem appropriate, but to carry out the purpose for which organization exists. This fund is also known as general fund or capital fund, to which the surplus for the year is added. In case of deficit, the deficit is deducted from the capital fund in the liability side with the balance sheet. Unrestricted fund वह फंड है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Whenever management need any, it can use the fund from this unrestricted fund. It is also known as general fund and capital fund. And another fund is restricted fund. The use is restricted. Restricted fund is that fund the use of which is restricted either by the management or the donor. जो इसका donor होगा या management होगा इसको restrict करता है because it can be utilized only to meet the specified purpose. For example, endowment fund, annuity fund, loan fund, prize fund, sports fund. Restricted fund वह फंड होगा जिसका यूज़ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा और किसी पर्पस के लिए इस फंड का प्रयोग नहीं हो सकता. नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ. द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज स्पेसिफिक फंड इज shown in the liability side of balance sheet of NPO along with addition of all income and donation received during the year for that specific fund and deducting all the expenses related to the fund. Second, in case expenses related to fund is more than the specific fund, the amount then excess is transferred to expenditure side of income and expenditure account. If any amount out of a specific fund is invested outside, then investment of a specific fund is shown in asset side of balance sheet. The next is if any accrued interest is there on investment of a specific fund, it also shown in asset side of balance sheet as well as added to a specific fund in liability side of balance sheet. Dear student, यहाँ ध्यान देंगे स्पेसिफिक फ़ंड जो भी बनाएंगे उसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होगा. फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम्स होंगी या डोनेशन होगा उन सभी को ऐड करेंगे
जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम यहाँ पर एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे पहले, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया रिलेटेड टू द फंड more than the fund amount, then expenditure is transferred to income and expenditure account. If any amount out of a specific fund is invested outside, then investment of a specific fund is shown in asset side of balance sheet. Whenever any investment is made, there is the possibility of accrued interest. अगर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिल पाया, दैट इज़ accrued interest, तो इसको भी हम स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में एज ए एक्रूड इंटरेस्ट शो करेंगे, साथ में इसको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जो फंड का टोटल अमाउंट होगा उसमें ऐड कर देंगे. दिस विल बी द ट्रीटमेंट. नाउ प्रो फार्मा स्पेसिमेन ऑफ स्पेसिफिक फंड विच इज़ डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ. सबसे पहले हम स्पेसिफिक फंड का अमाउंट ले आएंगे. इसमें ड्यूरिंग द ईयर जो भी इंटरेस्ट मिल गया होगा उसको लिखेंगे. इफ़ एनी एक्रूड इंटरेस्ट, इफ़ एनी एक्रूड इंटरेस्ट उसको भी प्लस करेंगे. डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर जो भी मिलेगा, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया स्पोर्ट्स फंड का. सपोज स्पोर्ट्स फंड इज़ देयर, तो स्पोर्ट्स फंड के नाम पे जो भी डोनेशन मिलेगा उसको ऐड करेंगे. इन सभी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद ये अमाउंट मिलेगा. इसमें से लेस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइज़ अवार्डेड, वट एवर एक्सपेंसेस, उन सब दोनों को माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे लायबिलिटी साइड में अमाउंट कॉलम में लिखेंगे. सपोज़ ये ट्रीटमेंट करते समय आप पाते हैं कि एक्सपेंसेस का जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे, ये दोनों एक्सपेंसेस अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है. नाउ एसेट साइड में जो भी स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट होगा आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, वॉट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द एनपीओ, उसको हम यहाँ पे एज ए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे. एक्रूड इंटरेस्ट इफ़ एनी, अगर कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड होगा ड्यूरिंग द करेंट ईयर तो उसको भी एसेट साइड में शो करेंगे. तो दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड सच एज स्पोर्ट्स फंड, एज एग्जाम्पल आई हैव टेकन in the balance sheet of NPO. Now one question is there. So how will you deal the following items while preparing the balance sheet of a club on 31st March 2019? Sports fund, suppose 1st April 2018 5 lakh, 10% sports fund investment as on 1st April 2019 5 lakh, interest received on sports fund investment 37,000, donation for sports fund 1,20,000, sports prize awarded 1 lakh, expenses on sports fund event 15,000. Now see the presentation of this information of specific fund, that is sports fund, in the balance sheet of NPO. Now balance sheet of NPO 31st March 2019. Now sports funds total amount is 5 lakh, add interest received during the year 37,500, again add accrued interest 12,500, and again add donation received during the year, that is 1,20,000, total is 6,70,000. Now डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड ड्यूरिंग द ईयर 1 lakh and expenses on sports event, that is 15,000. तो 1,15,000 डिडक्ट करेंगे from 6,70,000 and the net amount is 5,55,000 which is shown in liability side of balance sheet. Out of sports fund 5 lakh is invested, it will be the assets, so it will be shown in asset side of balance sheet, and accrued interest there is 12,500, it is also shown in asset side of balance sheet. Now this will be the way of showing sports fund in the balance sheet of NPO. Now one more question. The question is, so how will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019? The fund is match fund
1st April 2018 4 lakh, match expenses 8 lakh, donation for match fund 2 lakh 40,000 and sale of match tickets 3 lakh 60,000. Now see the treatment. First, match fund 4 lakh, donation for match fund received during the year 2 lakh 40,000, it will be added. Next is add sale of match ticket, whatever match tickets are sold during the match 3 lakh 60,000 income is arises, that will be also added with this match fund, and the total amount is 10 lakh. Now match expenses deduct 8 lakh, the net amount balance in the match fund is 2 lakh, that will be shown in the liability side of balance sheet of NPO as on 31st March 2019. This will be the way of showing specific fund in the balance sheet of NPO. Thank you very much for watching this video. If a student you like this video, like and share with your friends so that they can also get the benefit of this video. Thank you once again to all of you.